Coming back to the formula for G, children, G is equal to Gm upon R square. Looking at G, G is in the numerator and R square is in the denominator. Now, if one thing is up, another thing is down, we say they are inversely proportional. You can see here G and R square are inverse proportional to each other. Inversely proportional का simple meaning क्या है? अगर R का value ज़्यादा, that means the radius of the earth is more, then the value of G will be less. And अगर R का value कम, that means if the radius of the earth is less, then the value of G will be more. This is what is called inversely proportional. तो बच्चों आज का ये जो टॉपिक है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, ये समझने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दीस थिंग्स दैट आई हैव रिटन येलो. If the value of R is more, then the value of G is less. And if the value of R is less, then the value of G should be more. That means G and R square are inversely proportional. Now I told you there are three reasons why the value of G keeps changing. And the first reason is this. Change because of the surface of the earth, or I can say change along the surface of the earth. बच्चों earth के shape की वजह से the value of G changes from place to place. Now the question might be ऐसा कैसा earth के shape की वजह से G का value change होता है? Let us understand this in detail. Now to understand this, imagine earth. Obviously the center of the earth I'm marking, it might not be very visible, so I'm using my pointer to mark the center. Look at this point. This is the center of the earth. Obviously if this is the center of the earth, we all know the radius of the earth will be capital R. Now trust me students, I don't know how many people know this, but earth is not exactly spherical, but earth ka shape is something like this. It is oval. The shape of the earth is like this. It is flatter at the poles and it is slightly bulging at the equator. I repeat, the shape of the is flat at the poles and bulging at the equator. Now, because the shape is bulging at the equator, the radius at the equator is more compared to the radius at the poles. देखो डायग्राम से ही पता चलता है, पोल्स फ्लैट है, इक्वेटर थोड़ा बल्जिंग है, इसके लिए इक्वेटर पे ना रेडियस थोड़ा ज्यादा है और पोल्स पे अर्थ का रेडियस थोड़ा कम है. नाउ लेट अस कंसंट्रेट फर्स्ट ऑन द इक्वेटर. इक्वेटर पे मैंने बोला रेडियस इज मोर, एंड अभी मैं यहाँ पे डिस्कशन किया है, इफ रेडियस इज मोर देन द वैल्यू ऑफ जी शुड बी लेस. सो दैट मीन्स एट इक्वेटर रेडियस इज मोर and so the value of G is less. Now compare this to pole children. Poles पे radius कम है और यहाँ आपने अभी डिस्कस किया है अगर radius कम तो G का value ज़्यादा. So that means at poles the value of R is less and that's why the value of G is more. Now children, this is only for your information. याद नहीं रखोगे तो चलेगा, but at equator the value of G is around 9.78 meter per second square. लेकिन पोल्स के पास ना द वैल्यू ऑफ जी इज अराउंड 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इक्वेटर पे इट इज 9.78, थोड़ा कम है. पोल्स पे इट इज 9.83, थोड़ा ज्यादा है. एंड इसके लिए व्हेन वी डू कैलकुलेशंस वी ओनली कंसीडर द एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट रिमेंबर चिल्ड्रन, द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ. द वैल्यू ऑफ जी इज मोर एट द पोल्स एंड इट इज लेस एट द इक्वेटर. इसका मतलब as we go from poles towards the equator, the value of G will keep on decreasing, कम होते जाएगा. So the value of G is changing. So that was one reason why the value of G changes. The reason was shape of the earth. Another reason. The second reason is height. Children, the value of G also changes with height. I repeat, मैंने बोला the value of G also changes with height. अब ऐसा कैसा? Now to understand this, imagine करो earth. Obviously if this is earth, then this is the radius of the earth. I mark that radius as capital R. Now children, suppose assume करो there is an astronaut and that astronaut is going up in space in a rocket. And suppose now this is the current position of the rocket and this rocket is at some height h above the surface of the earth.
देखो बच्चों, मैंने बोला द रेडियस ऑफ द अर्थ इज r and from the surface of the earth the height of this rocket is h. So if I ask you a simple question, how far is this rocket from the center of the earth? ये रॉकेट एकदम सेंटर से कितना दूर है? It will be the sum of r and h. So that means रॉकेट का हाइट एक्चुअली है r plus h. अभी देखो r plus h का मतलब रॉकेट के लिए हाइट बढ़ गया, अभी क्यों उसका रेडियस बढ़ गया, that's why the value of g becomes less. हमने यहाँ पे देखा अगर r बढ़ता है g कम होता है. अब रॉकेट जो पहले यहाँ पे था वो अभी अर्थ से और दूर चला गया है, मतलब उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर और बढ़ गया है, एंड क्योंकि r बढ़ गया g कम हो गया. So what does this mean, children? This simply means one thing, as the height above the surface of the earth increases. मतलब जितना हम लोग अर्थ के ऊपर 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 जाएंगे, the value of g will go on decreasing. The value of g कम 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 होते जाएगा. जितना हम ऊपर जाएंगे उतना g का वैल्यू कम होगा. So children, just guess. The value of g will be more where? On Mount Everest or on the surface of the earth? Definitely the value of g will be slightly more on the surface of the earth because it is closer to the center. माउंट एवरेस्ट थोड़ा सेंटर से दूर है, इसके लिए वैल्यू ऑफ जी विल बी स्लाइटली, एकदम स्लाइटली इट विल बी लेस. सो रिमेंबर चिल्ड्रन, एज द हाइट अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस. नाउ इन आवर टेक्स्ट बुक्स देयर इज वन ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग टेबल गिवन, comparison between the value of g at different heights. Look at the first value, surface of the earth. Now at the surface of the earth, obviously height is 0. So the value of g is 9.8 meter per second square. This is the average value, children. Lekin if I go slightly up, Mount Everest का height from the sea level is 8.8 kilometers. लेकिन वहां पे भी है ना, g का वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं होता है, एकदम ही कम चेंज होता है, लेकिन हम लोग उसको भी राउंड ऑफ करके 9.8 ही लिखते हैं. अगर मैं और ऊपर जाता हूं, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय अ मैन मेड बलून, man-made hot air balloon का maximum height reached is 36.6 kilometers above the earth's surface. Surface के 36.6 kilometers ऊपर the value of g थोड़ा कम हो गया, 9.77. उसके और ऊपर weather satellite. Now weather satellite is the satellite which helps us identify the weather of any area. और वो सैटेलाइट अर्थ के आसपास जो चक्कर लगाता है, इट इज एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस. मतलब अर्थ के 400 किलोमीटर्स ऊपर इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. तो वो सैटेलाइट पे लुक एट द वैल्यू ऑफ जी, थोड़ा ही कम हुआ वापस, 8.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देयर इज वन मोर वैल्यू गिवन, हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट. नाउ दीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर द सैटेलाइट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल for us communicating. Matlab, these satellites are responsible for internet, these satellites are responsible for, mobile phone talking. In fact, these satellites are responsible why I am able to conduct these lectures now. And these satellites revolve around the earth at a height of 35,700 kilometers. Itna upar hai. Earth ke 35,700 kilometers upar. Look at the value of g, children, 0.225, almost negligible meter per second square. So this table also shows only one thing, and that one thing is जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे g का वैल्यू कम होता जाएगा. मतलब हम अर्थ के जितना भी ऊपर जाएंगे, the value of g goes on decreasing. So this was the second reason why the value of g changes. And the third reason is exactly opposite to the second. Second में हम लोग अर्थ के ऊपर गए थे, थर्ड में हम लोग बात करेंगे अर्थ के नीचे. That means right now I'm talking about changes with depth. अब ये है ना थोड़ा सा tricky है. So I want you all to pay attention now. Change with depth. Now again, to understand this, I'm considering Earth. But this time, let me not talk about an astronaut going up. Let me talk about a miner. And this person is digging a mine. Digging a mine मतलब he is going inside the surface of the earth. अभी तुम लोग पहले वाला लॉजिक यहाँ पे अगर लगाओगे, तो अगर ये आदमी
अर्थ के अंदर जाता है तो इसका डिस्टेंस अर्थ से तो कम हो गया, सेंटर से। अगर इसका डिस्टेंस कम हो गया तो जी का वैल्यू बढ़ना चाहिए, लेकिन बिलीव मी दिस इज द ट्रिक, जी का वैल्यू बढ़ता नहीं है बच्चों, कम होता है। आई रिपीट, मैंने क्या बोला? मैंने बोला the person who is on the surface of the earth, if he starts digging and if he goes inside the earth, now when he goes inside, if we apply our previous logic, तो इसका डिस्टेंस सेंटर से कम हो रहा है, और ये वाले रिलेशन हिसाब से डिस्टेंस कम हो तो जी का वैल्यू बढ़ना चाहिए, लेकिन बच्चों बढ़ता नहीं है, कम होता है। यू नो क्यों कम होता है? बिकॉज भले ही इसका डिस्टेंस कम हो रहा है, लेकिन the mass of the earth which is responsible for gravity also becomes less. See this, earlier when he was at the surface, pura ka pura earth was responsible for gravity, but now as he goes inside, only this much part is responsible for his gravity. तो इसके लिए ना अर्थ का मास भी कम हो गया, और मास इतना ज्यादा कम जाता है, देखो m इतना ज्यादा कम हो जाता है कि g का वैल्यू कम हो जाता है। So that means as he goes inside the surface of the earth, again the value of g decreases. जितना हम लोग अर्थ के अंदर जाते जाएंगे, g का वैल्यू कम होते जाएगा, और at the center the g value is minimum, it is 0 meter per second square. So that means children, there are three reasons why the value of g keeps changing. The first reason is the shape of the earth. मैं फटाफट रिवाइज करा रहा हूं, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज फ्लैट एट द पोल्स एंड इट इज बल्जिंग एट द इक्वेटर। नाउ क्योंकि अर्थ का शेप इज बल्जिंग एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा होता है और इसके लिए जी का वैल्यू कम होता है। पोल्स पे अर्थ इज फ्लैट, इसके लिए पोल्स पे रेडियस कम है और इसी के लिए जी का वैल्यू ज्यादा है। So that means the value of g is less at poles and more at the equator. The second reason we discussed what changes with the height. As the height increases, जितना height बढ़ेगा surface of the earth से, उतना g कम होगा. And the third reason was depth. जितना हम लोग अर्थ के नीचे नीचे जाएंगे, उतना g का वैल्यू चेंज होते जाएगा, कम होते जाएगा, and at the center the value of g is 0. Now children, I want you to apply your brains now. मैंने बोला सेकेंड रीजन में कि हम अगर ऊपर जाते हैं तो जी का वैल्यू कम होता है। मैंने थर्ड रीजन में बोला कि हम अगर नीचे जाते हैं तो भी कम होता है वैल्यू ऑफ जी। मतलब ऊपर जाएंगे तो कम हुआ, नीचे आएंगे तो भी कम हुआ, तो वेयर इज द वैल्यू ऑफ जी? मैक्सिमम। यस, करेक्ट, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस से थोड़ा भी ऊपर गए तो धीरे धीरे जी का वैल्यू कम होगा, अर्थ के सरफेस से नीचे गए तो भी जी का वैल्यू कम होगा, लेकिन अर्थ के सरफेस पे द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम। So students, there are three reasons why the value of g keeps on varying. One is the change along the surface of the earth, second is the change with the height, and third is the change with the depth. I hope bachcho this topic is very easy and very clear. Now moving on to the next topic, the last topic for today's lecture. Now in this topic bachcho, we need to study a very important and a very special physical quantity जिसको हम लोग बोलते हैं weight. Now मैंने तुम लोग को बोला it's a very special physical quantity. Now you might wonder why I'm using these words. Why special? It's so special in weight. The speciality is हम लोग जो common day to day life में weight का meaning पकड़ते हैं, physics में ना weight का meaning is completely different. You might have seen people saying my weight is 100 kg, the weight of this notebook is 200 grams, ऐसा सब बोलते सुना रहेगा, लेकिन actually what they are specifying is not the weight, it is the mass. So remember, day to day life में weight mass एक हो सकता है, लेकिन when we talk purely in terms of physics, weight is different and mass is completely different. तो हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग है ना मास और वेट दोनों साथ साथ में पढ़ेंगे, सो दैट हम लोग कंपेयर कर सकें और कंपैरिजन से हमको पता चले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. सो लेट्स
you know, study साथ में mass and weight. Let us first go with mass. Now children, what is mass? ये सब तो तुम लोगों ने 4th या 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. Mass is the amount of matter present in the object. किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है, मतलब कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स भरे हैं, that amount is called as mass. But remember students, weight is not the amount of matter. Weight is the force with which the earth attracts the object. बच्चों, hold on. Read that definition once again in your minds. I said weight is the force with which the earth attracts the object. अब हमको पता है कि earth attracts the object with gravitational force. Yes, यही gravitational force को हम लोग बोलते हैं weight. So in very simple words, remember बच्चों, weight is the gravitational force which is exerted by the earth. अभी अर्थ तुम लोग को भी कोई तो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तुम लोगों पे भी, दैट इज योर वेट. अर्थ तुम्हारे मोबाइल फोन पे भी कोई तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज योर मोबाइल फोन का वेट. So remember, one major difference between mass and weight is mass is the amount of matter present in an object, but weight is the force with which the earth attracts the object. And bachcho, the formula for weight is W is equal to mg. It's a very simple formula. W is equal to mg. W stands for weight, m stands for mass, and g stands for acceleration due to gravity. So बच्चों, fast take out your notebooks and go to the first page जहां पे हमने list of formula बनाया है. Come on, fast. Go to that page where we have made a list of formulas. And children, if I'm not wrong, in that list we have 5 formulas. The first formula was F is equal to gm1m2 upon r square या d square. Second formula was G is equal to gm upon r. बाद में था V is equal to u plus gt, S is equal to ut plus square, and V square is equal to u square plus 2gs. So these are the 5 formulas that we've already mentioned. Formula number 6. Right, W is equal to mg. Capital W, हाँ बच्चों. W is equal to mg. Okay, chalo, books closed. Now pay attention. We need to study more about mass and weight. So this was, bachcho, one point of difference between mass and weight. Mass is the amount of matter present in an object. Weight is the force with which the earth attracts an object, and the formula is W is equal to mg. Now, the second important point of difference between mass and weight. The second point is mass is a scalar quantity. I repeat the point. Mass is a scalar quantity. Now, I'm sure you have heard of this word scalar in 9th standard, but many of you might not be able to recollect scalar का मतलब क्या है. So I'll tell you in very simple language what is a scalar quantity. But your scalar quantity is that quantity which has only magnitude. मतलब it has only value. It does not have any direction. Tell me one thing, if you go to a shopkeeper and if you say give me 1 kg rice, तो तुम लोगों ने बोल दिया mass का value 1 kg. Does he ask you back कौन से direction से दूं, ऊपर से दूं या नीचे से दूं? No, right? He will directly give you 1 kg rice because mass only has magnitude. It only has value. It does not need any direction, and that's why we say mass is a scalar quantity. But hold on, weight is not a scalar quantity, but weight is a vector quantity. Vector quantity is a quantity which possesses magnitude as well as direction. Weight is the force with which earth is attracting the object. इसका मतलब weight is the gravitational force exerted by the earth. और हमको मालूम है gravitational force का direction हमेशा कौन सी तरफ होता है? Vertically downwards towards the center of the earth. तो इसका मतलब weight के पास direction भी होता है, and that's why weight is a vector quantity. So point of difference number 2. Weight is a scalar quantity. Mass is a scalar quantity and weight is a vector quantity. The third point is the unit. The SI unit of mass
is kilogram and the CGS unit of mass is gram. लेकिन वेट का ऐसा यूनिट और CGS यूनिट किलोग्राम और ग्राम नहीं है. सी बच्चों, मैंने बोला वेट इज द फोर्स विथ विच, फोर्स है वेट. So that means the SI unit is going to be Newton and the CGS unit is going to be time. And the last and the most important point, mass of an object remains same everywhere. Now imagine karo, I have a book jiska mass is 100 grams and I take that book to some other place. तो अगर मैं जस्ट उसको दूसरे जगह पे लेके जाता हूं तो उसका थोड़ी एटम्स मॉलिक्यूल कम या ज्यादा होने वाला है, उतना ही रहेगा. And that's why mass of an object will remain same. It will remain constant everywhere. लेकिन weight of a body changes from place to place. Weight change होते जाएगा. कैसे weight change होता है? अभी ये समझने के लिए ये क्या देखो, U is equal to G. अभी हमने पढ़ा कि G का वैल्यू चेंज होता है बिकॉज ऑफ 3 रीजंस. शेप ऑफ द अर्थ, हाइट, डेप्थ. तो अगर G का वैल्यू चेंज होगा तो डेफिनेटली W का भी वैल्यू चेंज होगा. सो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम एवरीवेयर but weight of an object changes from place to place. So children, 4 points of differences, and trust me, this is a very important answer in front of you. Distinguish between mass and weight. Point number 1, mass is the amount of matter present in an object, but weight is the force with which the earth attracts an object. Point number 2, mass is a scalar quantity, weight is a vector quantity. Point number 3, SI unit of mass kilogram, CGS unit of mass gram, but SI unit of weight Newton, CGS unit of weight dyne. And the last point, mass of an object remains same everywhere, but weight of an object changes from place to place because of that formula, U is equal to G. Now children, I want you to take a screenshot of this slide because this is going to be your homework. Your homework is not to write anything today, but your homework is you will by heart this answer. In my next lecture, I will randomly select 5 people. I will unmute 5 people. First 4 people will tell me one point each, and the last lucky person gets to answer everything, pura answer together. So in my next lecture, I expect all of y'all to by heart this answer of distinguish between and come. So I am done with today's lecture. It was a very mass and weight. Dhruv sir? Yes sir, done. Yes sir. Okay sir, thank you so much. Thank you.